यस सर, हम लोग लाइव हैं। लाइव। जी जी। नमस्कार, यूपीएससी संवाद में एक बार फिर से अमिताभ भट्टाचार्य साहब, रिटायर्ड आईएएस, हम लोग हम लोग के साथ हैं और आज हम लोग यूपीएससी संवाद में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को आज फिर उठाने वाले हैं और इस पर बेहतरीन जो व्यू है वो भट्टाचार्य साहब हम लोग के सामने रखेंगे। उनकी अपनी एक समझ, एक अनुभव, एक विचारधारा जिससे लगातार जो एस्पिरेंट्स हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए यूपीएससी संवाद को हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सर बड़ा कह सकते हैं कि टॉपिक है। तो इस बड़े टॉपिक को कैसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं? सबसे पहले टॉपिक पर सर 2 शब्द आपके। सर। थैंक यू डॉक्टर अनुराग। एक बार फिर आपके साथ चर्चा करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आई एम अरे! वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वन मोर डिस्कशन विथ यू and through Unacademy platform. So I am express my deep gratitude to Unacademy platform as well as you, Dr. Anurag, थैंक यू। for giving me the opportunity to discuss another very important topic from the examination point. जी, 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 जी। To the young aspirants. ये जो टॉपिक है ये आज के जमाने में ऑलमोस्ट एवरी डे ये आपको पेपर में खास करके तो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आपको अच्छा। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में और इवन नॉर्मल न्यूज़पेपर्स में ये आपको दिखाई देता है in view of the fact, mainly in view of the fact that many of the corporations or companies you have, they are not, there are a lot of problems with them. Some of them are involved in scandals, some of them are scams, but some of them are also doing quite well. So, इस वजह से all these companies and corporations are in the news almost every day. The business news, आप पढ़ते Economic Times हो, Business Standard हो, इसमें the entire paper is about the corporate governance and the Companies Act. तो इस पे आपने काफी सुना होगा, but you must have heard or read about those things like the new changes in the Companies Act, the new changes in the SEBI. आपने सुना होगा SEBI एक वर्ड बार-बार आपके ध्यान में आया होगा. Security exchanges and this thing SEBI is a security exchange and I suppose business industry. I mean, I'm sorry. अभी दो बताऊंगा. SEBI is an important, the watchdog. SEBI is a watchdog. They watch over all the transactions in the stock exchanges. जो भी stock exchanges है, जो main stock exchanges भी इंडिया में है, इसकी पूरी रखवाला जो है, the government side is semi government is a quasi judicial body. देखते हैं. So corporate governance means all principles of governance to be followed by all private companies, private limited companies, public limited companies, especially those companies who are listed in the stock exchange. They are called listed companies. सारे जो private limited companies, public limited companies are not listed. There is certain income revenue criteria होती है, turnover criteria होती है, वो their listing होती है. Because if you criteria even after acquiring those criteria because of the business volume of business के बावजूद भी if you don't list yourself in any of the recognized stock exchange, then you will not be allowed to do any primary sale or purchase of your shares by the public will not be able to do it, or even institutions won't be able to. These are illegal. It will be so willy-nilly, it will be, it has to be registered in the stock exchange. So once you are registered, the company is registered in the stock exchanges, then they are called listed. So listed companies and public companies and even private limited companies, they also follow a certain governance standards. Certain governance standards which are mentioned in the Companies Act 2013, and they are also mentioned in the SEBI listing of disclosure regulations, SEBI LODR. L is listing, O means of.
is disclosure, RBI's regulation. Every company which is listed in stock exchanges, they have to follow certain guidelines which are called LODR, listing of disclosure regulations, जो सेबी ने प्रिस्क्राइब कर दिया। तो ये कंपनीज एक्ट की तरफ से है, सेबी के LODR उसी तरफ से है। ये दोनों में दो जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट इज एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, LODR is a regulation which is passed by SEBI. It is not passed by Parliament, but it is a regulation. Regulation is, as you know, is a little less than the act. The act passed by Parliament होती है, regulation is passed by the administrative ministry होती है, company जो होती है वो जो bodies होती है. But anyway, even then, they are very quasi judicial. The SEBI has a lot of judicial powers, quasi judicial. It's not really court जैसे power, उससे थोड़ा सा कम है. तो इसको quasi judicial power कहते हैं. तो corporate governance principles have to be followed, number one. और उसमें the role of independent director. Now, who is an independent director? Independent director ये होता है, ऐसे होते हैं. Every company, whether private or public, limited. ये limited में बार बार ये word use कर रहा हूँ because limited by shares. तो ये आपको मालूम है जैसे companies act में definition क्या है. Company is तो उनका जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, एक उनके लिमिटेशन, दे आर लायबिलिटी इज नॉट इनफिनिट, तो दे आर ओनली लिमिटेड बाय द शेयर्स, दैट इज द लिमिट. बिल्कुल. तो इसलिए वो जो पब्लिक लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में गवर्नमेंट कंपनीज भी है, गवर्नमेंट कंपनीज में the company is more than 3% of the share capital is held by government. तो गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनीज, तो गवर्नमेंट कंपनीज की इसमें then some of the directors of the board of directors have to be independent from outside. Now, independent directors are like ordinary people. They are in the society, they are highly placed people like chartered accountant, bureaucrats like us, financial experts. They are maybe scientists. There may be many things. So they are selected from the market and then placed in the board. As who places it? जो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी में हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उस पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, तो उस पे जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जैसे नोडल मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड, तो MOPNG कहते हैं शॉर्ट फॉर्म. तो MOPNG will decide or select people from the high ranking people etc who have got experience and all that, उनको select करके उनको बोर्ड में अपॉइंट करते हैं for certain period. तो ये for example suppose स्टील अथॉरिटी अभी is also a government public limited as well as a government. उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इज द नोडल मिनिस्ट्री. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील विल डिसाइड ये किसको उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दे मे बी डूइंग समथिंग एल्स, they may be retired bureaucrat, they may be retired scientist, they may be doing something else, is a businessman or maybe something, but they will select them and place in their board. तो बोर्ड में independence of the board रखने के लिए उनको select किया जाता है, उनको place किया जाता है. Now independence का प्रेफरेंस क्या है, definition है जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है. You ask me what is the meaning of independence और उसका मतलब क्या है और उसको पर्पस क्या है, उसकी उनका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रोल क्या है, वो हम लोग रुकाएंगे और भी चर्चा करेंगे. पर मोटा मोटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द प्रिंसिपल्स बाय व्हिच द कंपनीज आर रन, द कॉर्पोरेशंस आर रन, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसी गवर्नेंस में स्ट्रक्चर में इनके बड़े खास अहमियत होती है, इनकी बड़े एक रोल होती है, उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको साझा करते हैं टू बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट and because of the provisions of the LODR, listing of disclosure regulation, जो सेबी का है. तो ये दोनों पर्पस के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है हमारे फिक्स्ड एरियो और उनके अपनी ड्यूटीज निभाते हैं. They are not permanent employees of the corporation, they are only एक इंडिपेंडेंट आउटसाइड डायरेक्टर्स जो इनके एक इंडिपेंडेंट व्यू लेके आते हैं और इनके काम होता है पार्ट टाइम काम होता है, इट नॉट दे आर नॉट फुल टाइम वर्किंग. जी सर. सर सबसे पहले तो हम लोग जैसे विषय में प्रवेश करेंगे, तो विषय में प्रवेश करने से पहले या आप कुछ प्रिंसिपल और कुछ कंपनी एक्ट के बारे में आप कुछ नॉलेज देंगे, उसके पहले एक सरल क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि जैसे कल आपने डिस्कस किया था
प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो अगर हम कंपनीज के बारे में थोड़ा सा समझना चाहें कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक चेंज सर हम लोग ने देखा था कि प्री इंडिपेंडेंस में ब्रिटिशर्स थे तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते थे, एक प्रकार से क्राउनशिप थी भारत में। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कंपनीज अपना जो है वो सब फ्री हो गया, पूरा इंडिया फ्री हो गया, तो सब फ्री होके काम करने लगे। तो जो जिनकी कंपनियां पीछे से चली आ रही थी, तो उन्होंने लगातार अपना काम करना शुरू कर दिया। कल आपने एक शब्द का प्रयोग किया था कि जैसे फंडामेंटल राइट्स में हम लोग यूज करते हैं संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार खत्म किया गया। तो इसका मतलब कि हम कितनी भी संपत्ति नहीं बना सकते हैं, या मान लीजिए उस पर रेगुलेशंस हैं। पहला और सरल प्रश्न सबको आराम से समझ में आ जाए कि सेबी का नाम आपने लिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी को क्यों बनाया गया? ऐसा कंपनीज जो हैं वो 1947 से 1987 या 88 के आसपास जब सेबी बनी, तो ऐसा क्या चेंजेस था कि सेबी को बनाना पड़ा? क्या कुछ कंपनियां घपला कर रही थीं, या क्या ऐसा था? क्यों जरूरत पड़ी सेबी को सामने लाने की? तो अगर ये चेंज हम लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाए, बिफोर सेबी एंड आफ्टर आफ्टर सेबी कंपनी एक्ट, तो हम लोग को ये समझने में आसानी हो जाएगी कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। मैं थोड़ी सी इसके पहले मैं सेबी के अंदर एक प्रवेश करूं। सेबी जी, की जी, जो जी, जी, कार्यकलाप जी, है, जी, इनका जी, जो वे मैं थोड़ी सी एक डेफिनेशन की तरफ आप सारे बच्चों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जी, जी, एक बड़े अच्छा डेफिनेशन है ये अपने शायद जो अभी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं, if they can please note down these things, because I have really got it after a lot of search. मैंने अच्छा, काफी जगह सर्च करके ये डेफिनेशन मैंने पाया है। तो जी, इसमें कोई निबंध हो बा, कोई ऐसे हो ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बा ऑन, because कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी buzzword, it's a very attractive word for a question है। जी, जी, ये जी, बार बार निबंध भी आता है इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, इंटरव्यू में प्रश्न पूछा भी जाता है, काफी सारे प्रश्न मैं भी मॉक में काफी पूछता रहता हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो इसमें एक बड़े अच्छा सा डेफिनेशन है, अगर किसी ने चाहे तो इसमें एक लिख सकते हैं। तो इसमें एक मैं जस्ट कह देता हूँ, इफ यू कैन समबडी, बच्चे जो हमारे से जुड़े हुए कैन नोट डाउन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस involves a set of relationships between a company's management, its board, shareholders, and other stakeholders. जी, जी, Relationship between the company's management, its board, its shareholders, and other stakeholders. हम्म, Other stakeholders मतलब जैसे ट्रेड में काम करती इनके साथ जो जुड़े होते हैं, इनका जो सप्लायर होता है, मान लीजिए सप्लाई गुड्स टू somebody, some other company, और तो those are the stakeholders. कंपनी अगर चले नहीं चले तो उनके काफी स्टेक्स है इसके स्टेक। Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set. Objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring. कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, ये एक कंपनी जो है इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनका विजन होते हैं, मिशन होते हैं। तो विजन्स और मिशंस को फुलफिल करने के लिए देयर आर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, एंड देन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज किया जाता है। बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, इनका पॉलिसी सेल पॉलिसी होती है, इनके रेवेन्यू अर्निंग पॉलिसी होती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, पर्सनल पॉलिसी होती है, एनवायरमेंटल पॉलिसी होती है, डिफरेंट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दोस ऑब्जेक्टिव्स। तो उसको एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, बार बार ये कंपनीज एक्ट में सेबी एलओटीआर में बार बार ये प्रश्न ये बार बार दोहराया गया है, द ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस टू द कम्युनिटी इज द bedrock of corporate governance. The people must know in the environment you are working in. They must know which company is the operation of the company, in operation of the company,
in a fair and a transparent manner. So, transparency and fairness are the bedrock of any company's corporate governance. अब प्रश्न ये आता है ये जो रेगुलेशंस जो है, बिकॉज सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी, बेसिकली वॉच डॉग बॉडी, क्या मतलब ऐसे पुलिसिंग, यू कैन से समथिंग लाइक ए पुलिसमैन। अब ये पुलिसमैन की क्या आवश्यकता हुई? अगर सब ऑल दी कंपनीज, बड़े हो छोटे हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, ये सब अपने अपने काम करे, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में करे, तो आपने ऐसे पुलिसमैन की क्या आवश्यकता है? जानते जो पुलिसमैन तभी आते हैं, पुलिसमैन की आवश्यकता तभी होती है जो है things are not going on smoothly, there is some problem in the management of the management in the order, in the order problems. So SEBI came into the picture because of a series of you can say scams or series of malpractices, this thing in the corporates. They are always celebrated the scams. This way, there are a lot of committees were formed. थोड़ी सी आपको एक आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। 1990 उसके पहले आपने रिमेम्बर हर्षद मेहता स्कैम, and there are those there are a lot of people of they took their own lives, very हर्षद मेहता के स्कैम था। उसके बाद ऐसे सत्यम कंप्यूटर के सत्यम राजू was a very big company, सत्यम राजू, it was a computer company, उस टाइम आपको याद होगा, they are just in the markets, computer they just started. Computer Satyam was Satyam Raju and brother, they were very big investors, and they had companies not only in India but they are all over the world. They had Satyam Computer has operations in all over the world. So like that, so Satyam Computer suddenly collapsed. Why they collapsed? Because they are the balance sheet, the companies were perfect, fake batch. They are जो receivables था, जो बच्चों जो हमने कॉमर्स किया है, I am commerce, I was also a trained auditor and I was a trained auditor. So if anybody who has done what will understand, in the balance sheet and in your income and expenditure statement, where suppose your revenues are fake, because there is a bubble revenue. It is basically there is no revenue. It is only just a book adjustment, and but expenditure is all real. Income is all fake, but expenditure they're all a lot of fakeness in that way. The vouchers are kept, the vouchers are reflected. Those days, remember, those days there was no computerized. They're all physical vouchers, physical drawing of balance sheet and income expenditure statement, profit and loss account. So, those then lot of investors they lost their entire. They simply went bankrupt. So the government then thought there should be more regulation. Because it laissez faire जो policy है, laissez faire policy means hands off policy. Nothing. The business takes their own interest. They are self-regulated. The regulation self-motivated. They will do the regulation themselves without any government's interference. So, but the government understood that because the share market, stock exchange, a lot of very small people invest. They are not very big businessmen. They do because they think the rate of return is too high, much higher than the banking investment. So they go to the market, it's a little risky, but they do take that risk. But then when such a thing happens, the people lose their entire life savings in the stock exchange because they collapse of such big business. Satyam Computers, then this. Even Maruti also, there was a case in which Maruti somehow managed to save themselves. There was a case in between Maruti. International sphere, there are a lot of Volkswagen, there is a famous case of Volkswagen. They really lost the market share. Then there is the Enron case. Enron was the energy giant in America. So they literally the bottoms were thrown out of that Enron case. Like that, the government also from their own case, their own examples in India, and also from the international example, they understood a market regulator, a market watchdog. So 1988, the Reserve Bank was also involved in committees, etc. They are market regulator like SEBI, security exchanges,
sorry, update. Keep on forgetting the Security Exchange Board of India. Board of India. I'm sorry, I keep on forgetting. Security Exchange is the Board of India. Never formed. Essentially under the RBI and the Finance Ministry. And now, of course, the SEBI has also now got into not only the stock exchanges, regulation of stock exchanges, they've got into actually the way the business, the company should behave themselves. Because as you know, the Companies Act has company this MCA, Ministry of Corporate Affairs, the nodal ministry का part sector में. But MCA के साथ साथ SEBI also is under Finance Ministry. They also have a lot of role to play, and they are doing admirable job. Because of course I happen to know the head of the SEBI because from my earlier association. They're excellent. It's lucky that we have got excellent officers. Best as SEBI head. SEBI, this thing is important. So SEBI is doing what they are supposed to do, regulating the stock exchange. That means ensuring that the people do not lose their life savings by playing in the stock exchange. That is the main. And secondly, for doing that, they also are doing so that the companies are regulated companies that their boards take decisions, the boards management is done in a way that they do not go into the risky area. Nowadays, earlier what is happening like the Hudson Mehta case, they will be having risky investments. Investments will be so risky that the chances of going for even the capital going for was very high. But nowadays, there are risk management policies in government, in the companies. The board of companies have to be not only they have to be have a very specialized advice. This thing there are also a lot of committees under the board level committees. They give specialized kind of advice to the board, like audit committee, stakeholders committee. मैंने एक आपके साथ डिस्कशन किया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल के साथ रहेगा वो भी एक बोर्ड लेवल कमेटी है तो दे आर जॉब इज लिटिल डिफरेंट दे विल बी the company can do for the community development के लिए but core business of the company is जो investment जो है shareholders money ultimately what is the company's worth is shareholders capital is shareholders people have bought shares and उसी से कंपनी चलती है तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी में शेयर्स उन्होंने परचेज करके जो कंपनी शेयर कैपिटल जो उन्होंने क्रिएट किया है उसको कैसे सेफगार्ड करें दैट इज द मेन most important job of the SEBI and also the MCA, the registrar of companies. There are a lot of bodies are there, share registrar of companies, the NCLT, the National Companies Law Tribunal, was a judicial body. There the NCLAT, the National Companies Law Appellate Tribunal. Appeal जो केस होती है appeal में जाती है. So there are a lot of paraphernalia जो है, but they are all aimed at making the shareholders, the stakeholders safe. They should not lose money because companies management problems or management decisions तो इन लोग को affect ना करे and that is the main reason why independent directors have been appointed. Independent directors because they are a watchdog like SEBI. Now SEBI is for the entire India. Now independent director like me, I am an independent director of a certain company. I will not mention name, it's not proper. But it's a huge company. And the director of a huge company. Now the investments will be thousands of crores. Thousands, literally thousands. Now my job is to also see the decisions the board में लिया जाता है, उसमें committees में लिया जाता है, their proper company हित में है, shareholders का हित में है. There is something called majority shareholder, which is government in the case. There is a minority shareholder, the common people है, उनका हित का उनका interest को safeguard किया जा रहा है, नहीं जा रहा है, वगैरह वगैरह ये सब चीजें मतलब independent director जैसे वाली independent director रोल क्या है? They are like they are just quietly seeing, watching and guiding. And sometimes they think that is something is going wrong. You step in, you say no, I will not allow because there are a lot of powers given to the independent. Board has full-time directors, but inside the companies, the officers who have been reason promoted and become highest level,
And so there are half in the government companies, there is some almost half are independent, half half are full-time direct. अच्छा Now the regulation says even one independent director suppose said no, normally company will not take that. Very अच्छा rare that company will take it. हम्म, But the independent director says the authority and reason. Oh, he has to be good in that subject. Cannot be just said I don't agree. But why you don't agree? You have to say reason. So you have to study. You have to really go. You're not a subject matter expert in that subject, but you have to really involve yourself, put your mind into it, learn the thing, and then you say it will be very, very rare in a company. So the job of an independent director is to safeguard the interest of the company, which means interest of the shareholders of the company, and also the other stakeholders. Other stakeholders, community, because people are buying goods from the company. Now, company has gone, the people will suffer. The creditors who give credit to the company will suffer. The debtors, जो company से जिनको मिलने वाला पैसा they will suffer. The company will suffer. The company को जो income tax वाला उनसे मिलता है वो नहीं मिलेगी. So everybody there are companies who suppose they fail or they don't are not kind of run successfully professionally, the entire community, the society. So the independent director, their role is they are like private people. They are independent. They are doing something else. Maybe a teacher, maybe a professor, maybe something full time something. But he is also part time doing. He is actually, I will call it that doing a service. So it is basically you are giving back to society your knowledge, your expertise. So that way, I will say that their job is to kind of serve the interest of the society and the I can say that. जी 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 नहीं बिल्कुल सही कहा आपने सर और कम से कम चीज़ें क्लियर तो हो जाती हैं कि एक्चुअल वर्ड का मीनिंग क्या है सर एक छोटा सा प्रश्न ये भी साथ साथ बन रहा है जैसे आपने न्यू कंपनी लॉ के बारे में चर्चा की तो न्यू कंपनी लॉ जो बने हैं तो वो इस तरह आज के टाइम पे जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो एक प्रकार से गबन करके भाग जाते हैं देश से और देश का पैसा अपने साथ ले जाते हैं कोई 10,000 करोड़ का घोटाला है कोई 13,000 करोड़ का है तो ऐसे बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं तो इन घोटालों को रोकने में कंपनी एक्ट कहाँ तक सहायक है हेल्पफुल है इसको ध्यान में रखते हुए अगर स्टॉक मार्केट को इसको जोड़ के अगर आप इसको पूरा समझा दें तो बड़ा अच्छा होगा अब बात रही अबाउट the new ways of defrauding, जी जी new ways of जी जी yeah, the new ways of defrauding the country. ये is a recent phenomenon. We will last 2 or 3 years. अब देखिए I will say, because from my experience in the corporate sector for the last almost, I will say that no company, whether it is a big company, whether it is a private limited company, or it's a public limited company, whether it is a government company or it is not a government company, the ordinary public limited company, no company whatsoever can do the things which we can. I mean, let's mention name because it will come in newspapers all over. It's public knowledge. Maybe the Nirav Modi scam, or maybe the Vijay Mallya scam. बिल्कुल. Now, these sort of scams basically happen because the banks were defrauded. Banks were defrauded. The banks were defrauded because the banks kept on giving them loans without realizing their earlier loans. मैं जैसे मान लीजिए डॉक्टर साहब मैंने आपको मान लीजिए 10,000 रुपया आपने लोन दिया है आपको चुकता करनी है आप थोड़ा सा दे भी रहे
पर बात मान लीजिए फ्रेंडली अरेंजमेंट है, मैं आपको दे रहा हूँ, आपको दिया विदाउट इंटरेस्ट ही मान लीजिए दिया, आप 1000 रुपये मुझे 10 महीने में चुकता करें, बट विदाउट setting up the without kind of settling the loan. Now after a month or two you come back and say कि सर जी मुझे तो वो तो है, पर मुझे और मान लीजिए मुझे 5 लाख और चाहिए, मुझे बिजनेस वगैरह चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल चाहिए, मैं आपको तो ठीक है, मैंने आपको इन गुड फेथ आपके सब रिलेशन अच्छा तो मैंने दे दिया, तो उसके बाद भी आपको ये आपका पुराने लोन भी चुकता करनी है, न्यू लोन भी चुकता करनी है। तो नाउ आफ्टर 6 मंथ्स यू अगेन कम बैक सेइंग आप तो ठीक है, मैं आपको देते रहूंगा, डोंट वरी, उसमें उसका भी इसका भी दोनों मिला के देते रहूंगा, पर आप मुझे अभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गया, मुझे 10 लाख और चाहिए ये बिजनेस के लिए। तो अब मान लीजिए आई keep on giving you without realizing my earlier exposure, without setting that, I keep on giving in good faith. Now the good faith will very soon turn into a bad faith. बिल्कुल, because good faith बहुत टाइम तक good तो रहेगा नहीं, because the gentleman who is taking loan, मान लीजिए आप से Mr. X चलिए, Mr. X आपसे ले रहा है, तो he understand this gentleman doesn't have any common prudence, तो है नहीं, इसका common prudence कहते हैं, financial target में prudence तो है नहीं, without realizing his own loan is kept on letter of credit कहते हैं, bank balance वगैरह। मैं कभी बैंक में कोई ऑफिसर भी था, बहुत पुरानी बात है, 40 साल पहले, तो इधर सब कैश क्रेडिट अकाउंट्स होती थी, एक कर तो उसमें इतना लिमिट होता था, उससे ज्यादा आपने आजकल का सिस्टम उसका नाम चेंज हो गया, तो नो बैंकर what is solved, even I will say even the lowest of the union most banker will never do anything with these banks unless there is a lot of other considerations. So it is not the recent scam जो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट करके भाग दिया and all that, there are other issues involved. It's not a purely, it's not a failure of the or the company's act or the failure. Not. It is a systematic failure of the banking system. The banks, the nationalized banks, they are unfortunately the nationalized banks. The nationalized banks behaving in such manner is unthinkable. I have dealt in finance sector, मैंने finance sector में काफी काम किया है, as I told you. I myself was a bank officer long ago. So I have even this union most stage, I have seen how the banks are very careful about that, even the smallest of loan they are very careful. So now your smallest of loan they are so careful that the thousands of crores they don't take that amount of care, nothing else. So there are other now point here है जो the now if they are board, for example the gentleman who I named, they just took money and left and things like that. Now why their own boards they did not object, their own board of directors they did not object, शायद एक दूसरे प्रस्ताव के मन में ये भी होता है, बिल्कुल पॉइंट ये प्रस्ताव है जो वो अपना जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्यों आपने इस पे आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया, जैसे बिकॉज़ दे शुड हैव नोन दैट ये तो ये कुछ इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, तो देख उसका मैं जवाब मुझे जितना आई डोंट नो द इनसाइड हिस्ट्री ऑफ द प्राइवेट कंपनीज, both of them all are not public, that private limited and some of the one or twice in public भी बन गया था। The board of governors, these private companies होती है, the owner based जो companies होती है, they are not professionally managed. They are dependent on one promoter, main promoter जो होती है, इस केस में आपको मालूम है, the gentleman name as a promoter. Now they are individual based companies, so they will keep in their board their only relations. And they will not keep them individual people in the board. They will be take them to ask or take them to question. They will not. So they always have an ulterior motive in mind. Ultimately, my hunch is that they always wanted to do something of this nature. So they wanted, so their boards will be full of these sort of people who will be the yes men, and they will obviously there will be quid pro quo also. कि आपके बोर्ड में भी क्विट प्रो क्वो तो होगा ही, so you look the other way, then that I mean every there are so many things, they maybe monetary, may not be monetary also, maybe something else, quid pro quo. So their boards close their eyes
and then the banks close their eyes. Banks close their eyes because obviously the intellectual inquiry will perhaps bring out all that. I don't know when the reports will come out. The country will be able to see those reports, whether it will be there at all for the country to document this. So all these things resulted into such a massive this thing of resources of the people who at their, and that is of course the taxpayers' money. And secondly, the shares of those companies, they just went up, just flat. Imagine the amount of investment, local small investor, they have those shares. Now the shares become paper. And nowadays there is no paper share. जो होता है ये डिमैट शेयर होती है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर, वारंट इशू होती है, डिविडेंड इशू होती है. So all they become just been done case. जैसे demonetization में बाद जैसे the currencies become that, those 500,000 rupee note become that, there is no value. So those share warrants बाद उनका share warrants they become. So that is what it is. See, this is a responsibility. Corporate governance is not only a job of the SEBI. Yes, SEBI is there, watchdog. SEBI will have so many hundreds of reports. They will ask. They will do all that. That's not everything, right? So every single, if you go through the Companies Act and the SEBI LODR, even if you have suppose a board has to sneeze also. I mean, sometimes when I will give a little. Sometimes I give a little talk or all that. तो सपोज यू आप थोड़ा सा आपके कुछ एक बोर्ड में मान लीजिए आज आपने कुछ लाइक मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा थोड़ा एक कपड़े की जगह थोड़ा आपने कुछ ऐसे मिष्टान ले लिया, समथिंग ले लिया, थोड़ा हायर वैल्यू कुछ ले लिया, तो भी आपको आज वो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होगा सेल को इलेक्ट्रॉनिकली. आई एम जस्ट जोकिंग. आई मीन इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट सो दैट. So like that, so there are so many MDT forms, 1, 2, 3 means the forms. And थोड़ी सी इसमें एग्जाम दे रहा था. I had to pass an exam. Yes, even at this stage, I mean, I had to pass an exam, in online exam to be a independent director as a regulation. You got to pass an exam online. So I was studying for all that. So in fact, it will be Herculean. I mean, you can't even remember those forms. So the MDT, but even with all the elaborate arrangements of the Companies Act, companies like the forms, register of companies के लिए forms, then SEBI का लिए forms, every with all that of notwithstanding, this ultimately the human greed, the human is supreme. Even if you are really interested in doing something, you will find a way. And I have seen, I mean, all these cases show that you will because human brain is the most complicated, and if you send it in a good direction, it will go to the ultimate good. If you send it to the wrong direction, it will go to the ultimately bad. There are people like that. Those scams, this thing that a simple thing, a bank's entire procedure was so much changed that I can't even imagine how a bank officer can agree to thing like that. The letter of credit, they don't think of their own credit. They keep on giving it. It's not a question of few lakhs and few crores, thousands of crores. They keep on giving. How they give? So I think. बिल्कुल सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मन में आ रहा है सर, कंपनी में कितने पर्सन होते हैं, मतलब कितने लोग हों तो कंपनी कहलाती है? So that of course there are those I'll just read from there. जी जी. मतलब कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से या कर्मचारी के हिसाब से नहीं, मैं आपको 2 मिनट मैंने कंपनीज एक्ट में जरा जी 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 जी. तो मैं आपको ये थोड़ा सा कंपनीज एक्ट, बिकॉज ये इसमें मुझे काफी अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए मैं जरा आपके पास एक्ट भी रखता हूँ. नहीं इसमें आपके साथ मैं अभी कंपनीज एक्ट हैज बीन अमेंडेड इन 2013. 2013 में इसका अमेंडमेंट किया है. तो उसके हिसाब से मैं अभी कंपनी का न्यू डेफिनेशन है उसका
Formation of a company. जी जी Okay. Formation of a company says that formation of a company says that a company may be formed by for any lawful purpose. जी जी For any lawful purpose. अब ऐसे चोरी करने के लिए कंपनियां पब्लिक में गड़बड़ नहीं कर सकती. बिल्कुल बिल्कुल Purpose is to steal somebody or do some terrorist activity. Then no, that is not a law. जी 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 It's illegal purpose. So it जी can be company can बिल्कुल lawful purpose. बिल्कुल By 7 or more persons, where the ओके company it will form is to be a public company. आपका promoter and first board of directors होगा 7 व्यक्ति company law sorry the register of companies को बन जाए पर incorporation में 7 signature चाहिए 7 पर public जी जी public जी and 2 or more persons where the company to be formed is to be a private company. दो व्यक्ति private company बना सकता है. अच्छा 7 व्यक्ति public company बना सकता जी जी है under the Companies Act जी 2013. And by subscribing their names or the names to a memorandum and complying with the requirements of this act, it is first you have to registrar of companies को जाके आपका एक memorandum of article memorandum of association MOA कहते हैं उसमें आपको बनाना पड़ेगा. उसमें भी पूरा सिस्टम दिया हुआ है उस memorandum of association में क्या क्या चीज होना चाहिए पैराग्राफ होना चाहिए पूरी सिस्टम है लिस्टिंग है तो उसमें 7 और प्राइवेट 7 for a public company, 2 for a private company. Subscribing their names, a memorandum of association and complying with some fees वगैरह भरना पड़ता है. Names कैसे कंपनी का नेम दिया ये सारे बड़ी elaborate है. जी 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 अच्छा सर जैसे कंपनी है अब जैसे आपने एक शब्द कहा था लिस्टेड कंपनी एंड नॉन लिस्टेड कंपनी तो इनकी डेफिनेशन और मतलब इनका क्या रोल होता है और कितना कितना परसेंट ये इंडिया में जैसे मान लीजिए क्या ये इकोनॉमी ऑफ इंडिया में कितना ये पार्टिसिपेट कर रही हैं मतलब कैसे किसी कंपनी को हम लिस्टेड कर देते हैं स्टॉक मार्केट में तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी अगर आप दें लिस्टिंग ऑफ कंपनी जो है मोटा मोटी जैसे मैंने आपको कहा लिस्टिंग ऑफ कंपनीज they are basically called they are listed in stock exchanges. सर वीडियो आपका नहीं आ रहा लिस्टिंग अगर जी सॉरी ये हटा गया था जी सॉरी तो listing of companies means they are listed in the stock exchanges for dealing in shares the sale or purchase of shares if you are not listed with the stock exchanges which may listed with SEBI the SEBI is the guardian of stock exchange. अच्छा अगर आपने listed with SEBI नहीं होते तो आपने आपका जो शेयर है कंपनी का जो शेयर है वो सेल परचेज स्टॉक एक्सचेंज में नहीं. अच्छा तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लिस्टिंग. अब लिस्टिंग जो है कुछ इसके लिए आपके लिए अनिवार्य है. आई विल जस्ट शेयर अबाउट व्हिच कंपनीज बेसिक थिंग कैन से द लिस्टिंग. अगर कोई कंपनी शेयर्स देखिए कोई भी कंपनी अगर आपकी शेयर खुद की शेयर अगर बेचना चाहते हैं उसे सेल परचेज करना चाहते हैं देन दे हैव टू बी लिस्टेड. तो दे कैन नॉट डू विदाउट लिस्टिंग बिकॉज़ देन दैट शेयर्स वगैरह कैन बॉट. अगर ऐसे कोई कंपनी चाहता है कि मैं कुछ लिस्टिंग की जरूरत नहीं तो मैं आपकी ऐसे से तो ऐसे कंपनी कोई मुश्किल है. आज की जमाने में कैन हैव ए कंपनी व्हिच देयर आर certain companies which are for example and I have given it not for profit company that was section 8 company. Section 8 companies they are basically like an NGO kind of thing. They are still a company. बिल्कुल They are not registered for any profit. They are doing something for the good of the society. Their profit is not the motive. So therefore section 8 company not for profit. So they are not listed in the stock exchange because their profit is not the motive. तो प्रॉफिट के लिए वो अभी रजिस्टर्ड हुआ इसलिए उस कंपनीज को रजिस्ट्रेशन लिस्टिंग नहीं होती है. बट in fact the most of the companies who are actually working in India they are for profit purpose earning profit. The primary purpose of a company is to earn profit for the shareholders and for issue of dividends. तो अगर प्रॉफिट अच्छा कमाए तो डिविडेंड अच्छा देगा.
यानी कि डिविडेंड मींस अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द शेयर होल्डर्स, डिविडेंड करते हैं, तो उसको वो एज ए पार्ट ऑफ दैट इज प्लाउड बैक टू द कंपनी अगेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिंग देयर कंपनी। तो ये है, तो इसलिए उनको आपने जो बिजनेस चालू रखने के लिए उनको लिस्टिंग अनिवार्य है, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज़ देयर शेयर्स, तो देयर जो कैपिटल जो सेकेंडरी मार्केट में जो उनके डीलिंग्स होती है, मान लीजिए उनके आईपीओ इनिशियल जो ऑफर होती है, इनिशियल एपीओ, फर्दर ऑफर होती है, उनके जो शेयर्स की ऑफर होती है, आईपीओ इनिशियल ऑफर होती है, एपीओ फर्दर ऑफर होती है, ये हो ही नहीं सकेगा unless they are listed in the stock. अच्छा, They तो will कोई not be able to. That कोई means they will not be able to raise money from the market. Raise money from the market like we get IPO, तो IPO इशू हो रहा है, अपने सुना होगा पेपर में बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट IPO इशू हो रहा है। देन IPO मतलब जो कंपनी अभी जस्ट फॉर्म हुआ है, तो IPO फर्स्ट इशू हुआ है, बट फर्दर जो इशू होता है बस कुछ दिन हो गया, कुछ साल बाद फिर कर रहा है, दे वांट सम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए दे वांट मोर मनी फॉर कैपिटल, सो दे हैव अगेन इशू दैट फर्दर उनका जो इशू कर रहा है ऑफर जो है, offer means they offer to the public to buy our shares, they invest in our company, so that is the primary. तो वो कभी कभी पॉसिबल होगा मार्केट से इनवाइट करी तभी कर सकता है when they are listed, otherwise they will not. नहीं, तो कोई सर्टेन अमाउंट होता है कि इतना अमाउंट कंपनी का होना ही चाहिए लिस्टिंग के लिए? अब ये है एक्चुअली, मैं आपको अभी देखता हूँ, मेरे पास ये मैंने कैलकुलेट ये करके रखा जो था। जी क्योंकि आजकल उसमें देख रहे हैं मोबाइल पे बड़ा जो शेयर मार्केट है वो मोबाइल पे गेम टाइप का। बिल्कुल आजकल बिल्कुल शेयर मार्केट पे ये तो सरकार इतनी इनको छूट क्यों दे देती है? ये तो बड़ा ही मतलब लोग फायदा कम नुकसान ज्यादा होता होगा भाई, ये तो बड़ा ही इस तरह का बिजनेस है या गेम है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए रोज इधर उधर हो जाते होंगे, ये चीज नहीं समझ में आती है। आए दिन कोई ना कोई आता रहता है, ये नया स्टॉक मार्केट के लिए गेम खेलिए, फलाना गेम खेलिए। ये एट प्रेजेंट तो सर समझ से परे है कि सरकार ऐसी चीज़ों को सपोर्ट क्यों कर रही है। अब जो आपके जो इनका जो टर्नओवर बाय सी क्राइटेरिया है, जी ये आपको मुझे एक्चुअली मैंने अभी वैसे बट वो अभी फिलहाल मैं आपको बाद में दे दूंगा, बट मेन चीज मैं ये आपको ये कह सकता हूँ। जी देखिए ये ऑल दीज जो अभी जो रिसेंट फेनोमेना है, जो बेसिकली इंटरनेट बेस्ड जो कंपनीज है, फिर जो स्मार्टफोन में आता है, these are all game shows, there are a lot of game shows, there are shows of charts. तो ये जो है ये चीज मोर, तो कंपनी से ज्यादा इनका जो असर जो है बेसिकली इंटरनेट जो इंडियन आईटी रेगुलेशन जो अभी एक्ट जो पास हुआ है, इनफैक्ट देयर इज मोर, इट इज वेरी एसेंशियल टू रेगुलेट दोस, दे से दीज आर ऑल काइंड ऑफ, इसके साथ साइबर पॉर्न भी जुड़ा हुआ है, साइबर पोर्नोग्राफी जुड़ा हुआ है, साइबर सेक्सुअल हैरेसमेंट जो केसेस है जो आपने टेलीविजन में डिस्कस होती है, तो ऑल दीज आर एक्चुअली ये ओ क्या हो गया? नहीं सही है सर, सही है, मतलब मेरा ब्लॉक हो गया टॉप यूजर्स टू गेट, पता नहीं कहाँ आ गया। नहीं सब सही आ रहा है, दिख रहा है सर सब। एरिया आ गया, वो बीच में कुछ एक एडवर्टाइजमेंट आ गया। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस इज अ प्रॉब्लम इंटरनेट प्रोटोकॉल, द आईटी मिनिस्ट्री जो है दे आर एक्चुअली दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द, दे कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट टू इंफॉर्मेशन, द राइट टू एक्सप्रेशन, आई हैव माय राइट, my internet access to me should be free, why should government regulate? There's a lot of controversy in between. Government
introduced certain changes in IT Act. IT, not income tax, but IT is Information Technology. Information Technology Act. तो उसमें government introduced certain restrictions. So subject to public order, subject to communal non-inflammation of communal feelings. तो ये इसके साथ ये सारे जुड़ा हुआ है. जो इंटरनेट बेस्ड जो गेम्स होते हैं, ये जो प्रलोभन दिया जाता है, दिस इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री एंड इसके साथ हैकिंग भी जुड़ा हुआ है. If you might be hearing that a lot of cases में कि there will some unforeseen calls आता है, they are saying कि you are do something, your आपको KYC हुआ नहीं है, know your customer नहीं हुआ है, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करो तो आपके साथ वो बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, तो आपका बैंक अकाउंट सीधे से खाली हो जाएगा. ये भी काफी सारे ऐसे देश में सुनाई भी देता है, होता भी है लोगों. तो इसलिए all these are basically unauthorized and illegal use and very dangerous use of internet by unscrupulous elements who are they are quite brainy. There are absolutely lot of but they are used for a very very wrong purpose. So इसमें there are more restrictions as for the IT Act. But Companies Act by SEBI LODR the Companies Act, the SEBI LODR, they don't talk about this. But these companies are, you don't even know what these companies are. It's a more of a shadow company. They're not shell company kind of thing. आप उसको companies को तो खोजने जाएंगे, इनके shareholders कौन है, sorry directors कौन है, इनका registered office कहाँ है, corporate office कहाँ है, कुछ नहीं मिलेगा. So these are all shadow. तो इसलिए the internet based जो हमारे जो over dependence on internet and YouTube for all these purposes for so I mean there is a new phenomenon called Bitcoin. जी एक Bitcoin भी आया हुआ है. Bitcoin is a they said it will replace the actual coin. digital money है वो. Digital currency. Yeah, so all these are very dangerous trends. In fact, they say this is the future of currency, digital currency for Bitcoin. I will say that these are the digital currency. They said it has no boundary. Digital currency has no boundary. It can be India as well as USA, same currency. But this is a very dangerous trend. And it has nothing to do with their Companies Act or LOD Act. These are not much higher beyond across national border. हाँ सही बात है. तो इसका पहलू जो है it has to be tackled from international collaboration, international cooperation of all the nations, and secondly, they must tighten our IT Act and the service providers जो है बड़े-बड़े companies जो है like Facebook, Google जो इनको they must listen to the government, the Indian law. They must be subservient. They cannot say, we are Japan world, we don't know anything. No. If you are inside this country, you are doing business in India, you have to listen to adhere to the कोई there is no exception. नहीं सही बात है. बिल्कुल सही सर. अब कंपनी और इन सब के डायरेक्टर्स के बारे में आपने बेहतर जानकारियां उपलब्ध कराई. अगर कोई चीज अगर रह रही हो तो आप चलते उसके बारे में बता सकते हैं. मैं इसमें सिर्फ आपको एक ही कहना चाहूंगा. एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रोल में थोड़ी सी और शायद आपको बेहतर कहना चाहूंगा. जी इसलिए कहना चाहूंगा because this institution of not only the independent directors and also the women directors. In fact, there is a provision for women director for certain level of company. मैं आपको कहता हूँ कौन सा कंपनी में women director is a must and कौन सी कंपनी में जो independent directors आपको रखना चाहिए. It is by law, by the Companies Act and SEBI LOD Act. उसको मैं थोड़ी सी आपको तो उसमें then my this thing is that this question may come the independent director's role because ये बड़े एक after all these scams because the independent director earlier was not there. जैसे कंपनीज का अंदर पार का क्यों आएगा. ये तो पार का भी अगर हमारा तो सब सीक्रेट जान जाएगा तो why. So but then there was this committee, lot of committees were formed. Kumar Mangalam Birla committee was part of SEBI. So they 2000 he said
then Naresh Chandra Committee 2002, Mhm. then 2005 Narayan Murthy Committee, and finally, so they all say 2005 onward, they said must be there independent, watchdog kind of a thing of the Companies Act for the sake of the stakeholders, the shareholders. So now, सेबी regulations में भी काफी उन्होंने they first time they said the board should be managed, should be advised by certain specialized committees who must see the proposal. मान लीजिए कोई investment thousands of crore, the company will be 1,000 crore, 10,000 crore. There should be a committee called audit committee. Now audit committee, there was no such auditing of any this thing. So they have now every companies. The audit committee the first the proposal जो financial proposal जो audit committee में scrutinize होती है के बाद वहां से पास होती है तब इनको उसमें मेन बोर्ड जी सर, जी सर। उसमें सॉरी उसमें देखा जाता है then audit committee then this CSR committee जैसे मैंने कहा stakeholders committee stakeholder मतलब the stakeholder का interest committee देखती है stakeholder में shareholders हो creditors हो debtors हो उसकी कोई interest पे कोई ये नहीं हो रहा जैसे committee says then in our remuneration earlier what it happened कि ये बड़े-बड़े जो डायरेक्टर्स होते हैं सीएमडीज होते हैं इनको अपना जो रिम्यूनरेशन है वो अपने आप सब ह्यूज रिम्यूनरेशन लेके निकल जाता है but no longer there is a committee called remuneration committee that a board level committee independent that वो देखेंगे सब आप ठीक ठाक ले रहा है कंपनीज को तो चीटिंग तो नहीं हो रहा है like that then एक इंटरनल कंट्रोल पहले कमिटी में कंपनी में नहीं हुआ करता था नाउ देयर इज इंटरनल ऑडिट होगा इंटरनल कंट्रोल्स होगा then this CAG audit is must CAG audit controller auditor general बड़े companies especially for government companies but at least chartered accountant audit of 6 or number of chartered accountant but reputed companies must be independent. Then there is a secretarial audit. So there is the cost accountant audit. There are so many kinds of audits so that कोई ना कोई रीते आपका कोई भी स्कैम हो जाता है घोटाला हो जाता है they all come out. And nowadays it's a very anything comes out then they have to be the MCA the Ministry of Company Affairs Corporate Affairs they have to be informed which I said निकलता है must be informed. So उसी में से then always public has a right to know the क्या. Then there are standards of accountancy. The bookkeeping जो होता है उन लोगों का accountancy standards है they follow not. Then the audit committee में report में होता है accountancy standards account standards जो है वो follow नहीं हो रहा है इस company में. So then so now this as I said the half of the board directors will be regular directors they are from the company and half will be from outside independent director the women director and the government nominee directors are outsiders तो उसमें अगर कोई इनसाइड डायरेक्टर्स कुछ करना चाहे तो भी बाहर का जो है उनका कोई स्टेक नहीं है they are just come for 2 years and then go back so they are a private people they are not grown with the company so they are so that way it is the one of the most essential part of the proper governance of companies which are actually a parallel company companies जो पूरा नेटवर्क देखिएगा प्राइवेट कंपनी ले लीजिए ऑलमोस्ट लाइक ए पैरेलल उसके पास इतने फंड्स है इतने शेयर कैपिटल है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस उसकी पूरी औजात उसकी पूरी मैनेजमेंट होना चाहिए तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल की डायरेक्टर्स they perform and and then then the independent director also a lot of responsibility. They said they also you are independent, but you are supposed to do these and they उनके जो चयन होती है, selection होती है, they will have to be they just can't be picked at this time. So there will be some selection criteria होती है. कोई भी सरकार हो बा इवन मान लीजिए
non-government companies, the board decides it's going to learn. The board, they have to, suppose somebody challenges that, they'll say because of this criteria, there's a fixed criteria in the Companies Act. वो criteria that following, that's you get selected. So he or her. इसमें so they have to be answerable to the public why you have chosen somebody. It is not आपका भाई भतीजा तो नहीं है. It's only because you are son or daughter. So ये भी है. Then मैं इस पे एक और चीज कहना चाहूँगा. Risk management. Now earlier they used to happen that the management director or CMD, they will decide scheme investment करनी है. Now the risk management company. So they will assess the risk of investment. ये अभी ये ऐसे risk आप invest करो तो उसमें risk involved है, उसके criteria पूरी है, उसमें बड़े scientific analysis होते हैं. Then it is proper to invest in the risky venture, risky कोई new activity हो, may not be the main activity of the company, but some other activity which they want to divert, like kind of they have to go into that area whether it's proper or not. But ये pretty आजकल पहले there used to be one person will take decision like CME and which yes man होगा, their own some friends or relatives they will decide. No longer so. There are independent people there on the board, and there are so many now committees are there. They have to go through all the proposals. So you have to be. But now professionally manage most of the companies, almost all the companies. But now if you don't do that, the SEBI and reaches SEBI's years, SEBI will ask for an explanation. And these the penalties of individual directors or CM, the company secretary, company will be a defaulter, and there will be strict penalties. Not only some of the cases may not be only financial penalty, it will be an imprisonment also, jail terms on the Companies Act. That is the new act. 2013 Act that prescribed. इसीलिए इंग्लैंड इसीलिए यूके भाग जाते हैं. इसीलिए ये भाग गया. तो क्योंकि अब इधर तो उनका हो जाएगा. तो अब ये अब यूके में ही रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा ये दूसरी बात है. But then regulation 27. तो ये मतलब ये अभी इतना checks, basically all these boils down to checks and balances. All the recent amendments of 2013 to new Companies Act are coming to be, and the SEBI LODR of course listing of the disclosure regulations. There are some 36 regulations of the SEBI. Both combined, they point out one thing, that the companies have to be professionally managed. They have to be transparent in their working. And third, they have to be working for the welfare of the shareholders, which includes shareholders and other stakeholders, which obviously include the entire society. Stakeholders means debtors, creditors, government, the people who buy their products, the people who kind of sell their products to this company. So all basically they have the macrocosm. But इसीलिए because the underlying that is the principle of CSR also is run, corporate social responsibility. They are part of the system. So you have to serve the society. So that's why it is not your charity kind of. You are taking the responsibility to the society. CSR is basically your responsibility to the community you are working in. So the entire independent director, the role of independent director, the role of women director, the role of nominee, government also places their own nominee to ensure that they are invested in the company, government companies. Financial institutions also give their, appoint their own nominee director. For example, some company has taken huge loan, maybe some huge loan, but the bank also puts one of the nominees in the board to look after their own interest. The बैंक का जो interest है, अब ये प्रश्न आप दूसरे है जो बैंक का that Kingfisher or this thing they must have got bank nominees, National Bank nominees. Child, I don't know this. But even with all that, how they allowed that sort of thing, I don't know. But this being so, but it has served a lesson. I am sure the banking sector and the government NCA, Ministry of Corporate Affairs, must have learned the lessons.
and we'll see many more regulations, many more tightening of regulations in the years to come, in months and years to come. They're already every 6 months we are seeing some new regulations from the sector. I'm seeing. So it is going. It is an ongoing process because it's a cat and mouse. The more you tighten, then somebody will find a loophole. So then they have to tighten the loophole. You have to put more laws. Then they have to like that. It goes on. नहीं, चूँकि आप जुड़े हुए हैं तो आपको लगातार अपडेट आप होते रहते हैं कि कौन-कौन से लॉज़ आ रहे हैं, क्या-क्या चेंजेज़ हो रहे हैं। तो आपका अपडेट होना तो बिल्कुल लाज़मी है। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और जनवरी का जो सेशन चल रहा है, इस सेशन का आज आपका लास्ट सेशन है। सर, चलते-चलते अगर बच्चों से आप 2 शब्द कहना चाहें? मैं सिर्फ बच्चों को जैसे रोज कहता हूँ, आपके साथ रूबरू हुआ, लगभग 10 सेशन हमने किया, शायद लगभग 10 सेशन किया। तो जो हर एक सेशन में जैसे बच्चों के साथ मैंने मैं एक संदेश मैं हमेशा देता हूँ, वो है ये प्यारे मित्रों और कोलीग्स, ऑल कोलीग्स इन दिस, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, ये जो डिस्कशन होती है, जैसे डॉक्टर साहब और मैं जो डिस्कशन करता हूँ, ये बड़े जो अहम मतलब है, ये व्हाई इट इज अहम, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड डिस्कशंस नॉर्मली कोई फोरम में मैं तो नहीं देखा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखा, नहीं, मैं भी थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, पर ये कोई जगह नहीं देखा है। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिकल बेस्ड जो डिस्कशंस होती है, इसकी एक आपके मन में प्रश्न होता है कि अब प्रैक्टिकल बेस्ड डिस्कशन में हम लोग का क्या फायदा, अब तो एग्जाम पास कर लिया, कंप्लीट कर लिया, बट आपको अभी जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी जो क्वेश्चन पेपर्स की जो ट्रेंड है, मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा की रोज को क्लासेस लेते हैं, इसमें अभी जो ट्रेंड है, ये थोड़ी सी जो तो रिसेंट एडवांसेस और रिसेंट चेंजेस है, इसके बारे में काफी पूछा जाता है, और उसको भी जो रिसेंट पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इसको पूछा जाता है। सिंपल कोई टॉपिक लेके वो पूछते नहीं है, पूछते फ्रॉम द रिसेंट पर्सपेक्टिव, रिसेंट सोसाइटी में उसका क्या चेंज आ रहा है, सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो ये जो सारे इम्पैक्ट जो है, चेंजेस जो है, ये हम तो आपको कराते हैं बिकॉज ऑफ और experiences in this sector and continuing experience. Like this sector, I'm still evolving. I'm still in इसके साथ जुड़ा हूँ. Every day I'm associated with the almost every day I'm working for this sector. For the last so many years, I've been more than 2 years, 3 years I've been doing it. तो there are many subjects, जैसे मैंने आपको कहा, हमने we are evolving. These sectors are evolving. इसमें questions paper जो पहले 4 साल पहले जो इस और तो सेम सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएगा, बट वो क्वेश्चन का नेचर चेंज, तो वो जो नेचर, जो चेंजिंग नेचर है क्वेश्चन का, जो ट्रेंड है, जो ढांचा है, उसके साथ आपको रूबरू होना पड़ेगा, उसके साथ टाइम्स रहना पड़ेगा। तो सब तो कीपिंग विद द टाइम्स रहने के लिए आपकी इस टाइप की जो पर्सपेक्टिव है, इस टाइप की जो डिस्कशन है, बहुत जरूरी है, बिकॉज these discussions are evolving. Discussions हम करते ही evolve with time, because ये हमारे आपको अभी तक पूछना जरूरत है। It's not that this subject 2 years ago क्या था, 3 years ago, ये 2 years ago 3 years ago का थोड़ा हिस्ट्री हम जरूर देते हैं, but we are all right to give you the latest the happenings and what is the impact of this sector ultimately society के ऊपर। ये जो कोई भी सेक्टर हम डिस्कस करते हैं, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज ये यूपीएससी जो हायर रिक्रूटमेंट सर्विसेज जो क्वेश्चंस होते हैं, दे ऑलवेज द क्वेश्चन सेटर जो they always look for those kinds of relevance of that particular sector, the evolving sector, the developments in the sector with the impact on the society, the current society, the society of today. तो इसी वजह से ये जो डिस्कशंस है बड़े जरूरी है। I hope you have taken advantage of those discussions, you have noted down them, because it will help you. It will help you when you actually appear in those examinations. तो इसलिए मैंने आपको बार-बार ये कहते आया है, last 10 years I've been telling you, please take out your pen and paper, note down these points, take out your diaries, keep those diaries, and when you go for the exam, refresh them, revise them. It will help you.
that is what perhaps the today will be the perhaps last one, at least in this one. So that's my advice. नहीं बिल्कुल आपकी जो सर Young, एडवाइस young listeners. जी 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 नहीं नहीं बिल्कुल ये एडवाइस बिल्कुल खरा सोना है आपकी एडवाइस और बच्चे इसका लाभ जरूर लेंगे मुझे भी ऐसी पूरी उम्मीद है सर आज के यूपीएससी संवाद को हम लोग यहीं पे आज समाप्त करना चाहेंगे समय भी हो गया है और बिल्कुल जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी फरवरी एडिशन में और बच्चे भी आपका इंतज़ार करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद अनअकैडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए हम सब लोगों के साथ जुड़ने के लिए हम सब बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब आप जैसे महारथी जिन्होंने सिविल सेवा को एक बहुत लंबा अनुभव कमाया है तो निश्चित तौर पे हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा गौरवपूर्ण बातें हैं कि आपके सम्मुख हम लोग बैठ पाते हैं दो बातें आपसे हो जाती हैं बहुत अच्छा लगता है सर और बच्चे भी इस बात का लाभ उठा रहे हैं इससे अच्छा क्या होगा तो ये अनअकैडमी को तो खैर कोटि कोटि धन्यवाद तो सर अब समाप्त किया जाए Unacademy, मेरे तरफ से Unacademy को lakhs and lakhs of things for allowing me, giving me an opportunity to interact with young listeners like you through Dr. Saab, Dr. Anurag. And Dr. Saab, thank you so much for your patience, for your hard work, and your absolutely such a brilliant, such pleasant way you had conducted those interviews with me. Thank you, sir. I'm deeply grateful to you for your effort. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Anak.